नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय खाखिल आज आप लोगों के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, प्रोसेस शेड्यूलर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस शेड्यूलर क्या होता है, किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में ये काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रोसेस शेड्यूलर एक एक्टिविटी प्रोसेस होता है जो मैनेज करता है किसी भी रिमूवल और रनिंग प्रोसेस को, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सिलेक्शन का काम करता है, जो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के साथ में काम करता है। दूसरी चीज़, जो प्रोसेस शेड्यूलिंग एसेंशियल पार्ट में एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ काम करता है। तो उस प्रोसेस के अंदर वो लोड करता है, एग्जीक्यूट करता है और उस प्रोसेस को सीपीयू से मल्टीप्लेक्सिंग में लेके चला जाता है। दो तरीके के होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस मैनेजर that handles the removal of the running process for CPU, and it's the selection of another process on the basis of the particular strategy. Process scheduling is an essential part of the multi-programming operating systems. Such operating system allow more than one process to be loaded into the executable memory at a time, and loaded process shared the CPU using the time multiplexing. There are three type of the process scheduler. कौन कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म और जॉब शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म और जॉब शेड्यूलर क्या होता है? इन brings the new process to the ready state. It controls the degree of the multi-programming number of processes present in the ready state at any point in the time. It is important that the long-term scheduler make careful selection of both input-output and CPU-bound process. Input-output bound tasks are which use much of their the time in input and output operation, which CPU-bound process are which spend their time on the CPU. The job scheduler increase the efficiency of the maintaining and balance between two. They operate at the high level and they typically use the batch processing systems. Another होता है शॉर्ट टर्म और सीपीयू शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म और सीपीयू शेड्यूलर की जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या होता है, ये कुछ समय, कम समय के लिए काम करता है, रेडी टू रनिंग स्टेट्स के लिए काम करता है। It is responsible for the selecting one process from the ready state for the scheduling it on the running state. Note: short-term scheduler only selects the process to schedule. It doesn't load the process on running. Here is when all the scheduling algorithms are used. The CPU scheduler is responsible for the ensuring there is no starvation owing to high burst time process. The dispatcher is responsible for loading the process selected by the short-term scheduler on the CPU. Ready to running state. Context switching is done by the dispatcher only. The dispatcher does the following. First one is the switching context, switching to user mode, jumping to the proper location in the newly loaded program, a medium term scheduler. And another one is it is responsible for the suspending and resuming the process. It mainly does sweeping, moving process from the main memory to disk and vice versa. Sweeping may be necessary to improve the process mix or because a change in memory requirement have the overcommitted available memory, requiring memory to be freed up. It is helpful in the maintaining a perfect balance between the input-output bound and the CPU bound. It reduces the degree of multi-programming and some other schedulers. तो ये था आपका शेड्यूलिंग प्रोसेस, जिसके अंदर प्रोसेस शेड्यूलर के अंदर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, किस तरीके से ये काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कर्नल मल्टी प्रोग्रामिंग्स के बारे में।
रिक्वायरमेंट कर्नल्स के बारे में। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।